Mr. Anuj is a very dynamic person wearing many hats. He is a life coach, well-known banker and entrepreneur. And of course, in the healthcare domain, he has expertise. So over to Mr. Anuj. We can't hear you, Mr. Anuj. Can you unmute yourself? No, still you are on mute. I think admin can unmute. Admin, can you try to unmute Mr. Anuj? Sure, sir. Yeah, it is showing mute mode. Done, sir. Thank you, Mr. Mukesh, and regards to all the learned panelists. I was just hearing all of them with lots of interest, because as we all know that we are running through a very, very difficult time, our country and the entire world, and nobody is looking very, very happy, you know. And this is such a difficult time when doctors are getting affected and we don't know where to go now, you know. And I would really like to thank Aasicham for organizing this program, because this is a very, very, not only it's a difficult time, but this is a very, very confusing time also, because people don't know as to what they should resort to, you know, because as I just said, that even big doctors are getting affected and even medicines are not working. People are taking all kinds of medications, all kinds of precautions, but they are not there to save themselves. Here, I would like to mention that around 20 years back in 2002, I got an opportunity to read this particular book, which it was released from America, United States of America. And the writer was Mr. Paul Zane Pilger. And he has written a book called The Next Trillion. And in that book, he had mentioned that in future, the diseases of the future will not be cured by any disease, any medicine. Rather, it will be cured by the wellness industry. And he had predicted that wellness industry is the next big thing that is going to come. In fact, he was economic wellness expert, you know. So he was mentioning about the next $1 trillion industry that is going to be happening with the wellness industry, you know. So in that particular book, he had said that we will have diseases which will not be cured by any kind of medicines. There won't be any medicine. I'm not audible? Yeah, I can hear. Audible, sir. Audible, sir. Okay, thank you. Somebody had written that my voice is not audible. You know, have you ever wondered that where we have gone wrong? I'm not talking about the entire world. 5,000 years back, we had Susruth, we had Charak, but I'm very sorry to say that we have stopped there. आज से 5,000 साल पहले हम लोग वर्ल्ड के लीडर थे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वहीं हम लोग रुक गए हैं. आज से बहुत साल पहले भी हम लोगों ने देखा, हमारे ऋषि मुनि थे, और saints, they used to live in Himalayas. एक छोटा सा वो कपड़ा पहन के वो हिमालय में रहते थे, and they would stand all kinds of torrid climate in the Himalayas, and they won't be affected by any kind of disease, living for more than 100 years, you know. And why this thing happened? Because they totally believed on living a very, very healthy lifestyle through 4 fundamental principles of good health. That is, I would like to sum it up in 4 words. That is exercise, attitude, rest, and nutrition. While we can have control over 3 things, that is exercise, attitude, we can keep a positive attitude, we can take adequate rest. But I'm very sorry to say that over a period of time, we have lost total control about what we are eating and what we should be eating. You know, आज हमारे जो भी हमारे पहले के जितने भी लोग थे, they had no other source of getting nutrition. They only had their foods through which they used to get their nutrition. And during the past several years, because of commercialization and other factors, we have lost total control over those things. Because in earlier times, there were not much of transportation and people would eat what they used to produce themselves. जहां तक उनकी पहुंच थी, वो लोग वो खाना खाया करते थे. Because of things that were started coming from outside,
You know, we are facing so many health challenges during these times. We have just lost total control over the nutrition that our body requires. We have no idea as to what our body needs. You know, I was also reading this particular book, What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine That May Be Killing You. It is written by Ray D. Strand. He is himself a doctor. And in the first preface, he writes that, physicians are disease oriented. We study disease. इनका बिल्कुल ये कहना है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट द वेलनेस इंडस्ट्री. हमारे यहाँ आप बीमार पड़िए उसका उपाय है, लेकिन आप बीमार कैसे न पड़िए इसके बारे में कोई चर्चाएं हमारी सोसाइटी में नहीं होती है. एंड हियर बट्स इन द रोल ऑफ द न्यूट्रिशन. हम लोग पहले, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन डेवलप नहीं थी, हमारे यहाँ कोई सर्जरी डेवलप नहीं थी, और हम लोग अपने वेलनेस, अपने फूड न्यूट्रिशन से और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने आप को हम लोग हेल्दी रखते थे. अभी आप किसी से भी जाके बोलिए न्यूट्रिशन के बारे में, पीपल हैव नो आइडिया एज टू व्हाट दे शुड बी ईटिंग एंड व्हाट दे आर ईटिंग. आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछिएगा हाउ यू आर टेकिंग योर न्यूट्रिशन, दे वुड से दैट वी आर डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज आवर फूड. वो बोलेंगे कि हम आंवला ले लेते हैं. उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको कितनी विटामिन सी की जरूरत है और कितनी उनको एक आंवला से मिल रही है. अगर हम लोग फूड की बात करें, पहले के समय में, पुराने समय में हमारे फूड से सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाया करती थी. आई वुड लाइक टू कोट हियर a study, in 1948, 100 grams of spinach used to give us 158 milligram of iron. In 2010, it only has 2.7 mg of iron. 158 mg से आज 2.7 mg iron मिल रही है 100 grams of spinach में. Food processing, polishing rice removes 75% of zinc and 75% of chromium. And as Mr. Narendra Shetty was saying, that we are heading towards a global, powerhouse of diabetes. We all know that one of amongst the few reasons why we are having diabetes is because of lack of enough zinc in our food and lack of enough chromium in our food. And what we are eating all the reduced quantities of essential vitamins and minerals and trace elements that used to be there in our food, and we used to get our foods and we used to keep ourselves happy. Our cropping pattern have changed. We have gone from requirement phase to commercialization crop to crops to keep ourselves healthy. We are using more and more artificial manures, pesticide, pollution are consuming our vitamins and minerals from our body. Our body's requirement of vitamin minerals have increased. Stress. Mr. Narendra Shetty mentioned about that. Long distance transportation, and these all are causing our vitamins and minerals going out of our food thing. See, we must all understand as to what these vitamins, minerals give us. Hardly any of us try and understand this fact as to why these animals, they fall, they don't fall sick when they drink dirty waters from our backyard. And why even if we are staying at our homes and one glass of dirty water and we get sick, हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे जानवर बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे जानवर विटामिन सी प्रोड्यूस करते हैं. उनके शरीर में सिंथेसिस के थ्रू विटामिन सी पैदा किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन दे फॉल लेस सिक. वो कम बीमार पड़ते हैं, वो गंदे पानी को पीकर बीमार नहीं पड़ते हैं. लेकिन हमारे शरीर को भी विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है. हमारे शरीर को भी पॉल्यूशन से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए विटामिन सी की जरूरत है. विलियम सी पैलिन, he has twice won Nobel Prize on his research on vitamin C. मैंने बताया ना कि किसी व्यक्ति से आप बात करिए तो बोलेंगे कि मैं नेचुरल मैं नींबू खाता हूं, मैं आंवला खाता हूं और उससे विटामिन सी लेता हूं. We hardly understand the importance of optimal health. ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में ना हम कुछ जानते हैं, ना हमें कोई बताने वाला है, ना हम उसके बारे में कभी भी बात करते हैं. हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन, अगर कुछ भी होता है, वी वेट टिल वी बिकम सिक. हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हम बीमार पड़े और हम डॉक्टर के पास जाए.
We hardly know the importance of these essential vitamins, minerals, trace elements. हमारे यहाँ हमारी कंपनी मैं जिस एमवे कॉर्पोरेशन के साथ काम करता हूँ, they work the most on soil management, and as we all know that how much important role trace elements play in our day-to-day healthy lifestyle, and where you get your trace elements from, it only and only comes from soil management. ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही आ सकती है. हमारे यहाँ मिट्टी पे काम होना बंद हो गया है, तो हमारे खानों में ट्रेस एलिमेंट्स की मात्रा कम होती चली गई है. हमारे यहाँ विटामिन सी वी डोंट अंडरस्टैंड. विलियम सी पैलिन कहते हैं कि यू कैन टेक इवन 2000 mg ऑफ विटामिन सी एवरी डे, एंड ही हैज वॉन नोबेल प्राइज फॉर दैट. बट आप अगर किसी डॉक्टर से बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप बीमार पड़ जाएगा. आई डोंट नो, जनरल पब्लिक विल बी कंफ्यूज्ड एज टू वेयर दे शुड गो. And here comes the role of company like Amway. आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, but why we are so special? Because Amway has been talking about vitamins and food supplements since 1934. बहुत कम लोगों को मालूम है. We have been doing extensive research and manufacturing products that would supplement our day-to-day requirements, the vitamins, minerals, and trace elements which we are not able to get through our regular foods. We can get from these food supplements. जो भी हमारी deficiency है उनको पूरा कर सकती है. 1934 से there are certain unique things about Amway. Why we are so special? Because we are the only company which creates quality control from seed to supplement. आज मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको हमको जानकारी नहीं है कि कौन से 3 फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. पीएसपी फॉर्मूला पर हमारी कंपनी काम करती है. वो बताती है कि पोटेंसी कितनी जरूरी है, सेफ्टी कितनी जरूरी है, एंड प्योरिटी कितनी जरूरी है उस प्रोडक्ट की. आप किसी भी कंपनी से आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं. मैं अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंसिव रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग दैट आवर कंपनी पीपल आर हैविंग व्हेन दे आर मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स. आप किसी भी बहुत ऑनेस्ट कंपनी का भी आप मैन्युफैक्चरिंग आप ले सकते हैं, बट व्हेन दे आर सोर्सिंग देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सम अदर कंपनी, जस्ट 2 minutes I will take Mr. Mukesh. Yeah, please. If their sourcing is wrong, their final product will be wrong. I have seen companies जो कि अच्छा से प्रोडक्ट मंगा लेते हैं किसी कंपनी से, वो अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं रॉ मटेरियल का, बट इफ द मैन्युफैक्चरिंग इज रॉन्ग, द पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट good and great final products. So what I would like to finally sum it up with will be कि आज हमें और इंडिया को समझने की जरूरत है कि there are 2 industries altogether. One is a disease industry and the other is wellness industry. आज कोविड ने हम लोग को सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि आज any kind of medicine is not helping. आज भी लोग क्या दे रहे हैं? आज विटामिन सी दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, और यही चीज हम लोग इतने वर्षों से बात कर रहे हैं. We all need to come up on one platform and start working on this thing called wellness industry. We are doing all kinds of things, but India and the world needs to do lots of things still to put things in the minds of people and understand the importance of wellness industry. Thank you, sir. I think Mr. Anuj, you have mentioned that there is 2 industries. Anuj ji, आपके लिए we have a question from here from Mr. Rajiv Ranjan. उन्होंने बताया कि if our Asian thoughts are required now, then what is the use of recent research? Can you repeat the question, Bharat? Sir, there is lots of echo happens whenever you are. So mute करने के लिए आपको बोलूँगा सर एक बार. So the question is, if our Asian thoughts are required now, जैसा कि आपने अपने कहा कि सर पुराने सभ्यता में ये सब था हमारे पास मगर अभी नहीं है. So he's telling the one gentleman, Mr. Rajiv Ranjan is telling that if our ancient thoughts are required now, then what is the use of recent research? जो अभी हम लोगों ने recent research किया उसका क्या फायदा? Again, you have to unmute yourself, sir. Yeah. See, research are a very regular things, and
they are not confined to one particular thing and that can be used for centuries. They keep on changing as we come forward and keep discovering new things. We keep working on that. And what I meant by saying that around 5,000 years back, we had Shushrut, we had Charak. But in Indian context, there have not been much research in, in our country on these things. But thankfully, Amway has been constantly changing its product, mix, their vitamins mix. Like recently, they have brought in this vitamin C with Cherry Plus with extended release. Because when you take this vitamin C of 400 mg, it can take care of your 8 hours of your immunity. After 8 hours, you again have to take one more thing, and likewise in the whole day can be taken care of. Your immunity can be taken care of by taking 3 tabs of vitamin C at 8 hours interval. So what I meant to say is that the research are very dynamic things and it keeps on changing with the requirement of the time. And when I said that we have not done much research, तो मेरा मतलब ये था कि 5000 साल पहले हम तो रुके हुए थे. आज रिसेंट रिसर्च में इतनी सारी चीजें आ रही, बहुत सारे प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारे प्रोडक्ट के मिक्सचर्स को चेंज किया जाता है. जैसे हम लोग जब शुरू में आए थे तो हमारे पास कैल मैग था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन था. बाद में हम लोगों ने कैल मैग डी लाया. वैसे ही आयरन हम लोग लाए थे, फिर हम लोगों ने आयरन चेरी प्लस लाया. आयरन का चेरी प्लस के साथ कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ आर्थराइटिस के लिए प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन HCl विथ बोसिविलिया. मार्केट में भी है, बट ग्लूकोजामाइन सल्फेट है. वी डिड एक्सटेंसिव रिसर्च एंड वी केम अप विद दिस फैक्ट कि जब आप HCl के साथ इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंप्रूव्स. Amway की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? दे कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन द सेम थिंग्स वेयर वी लिव्ड 5000 years back. Very much. Before going to the session, we have all the speakers, right? We have Mr. Pradeep Hajare, sir. So Pradeep Hajare, sir, one रेगुलर चेकअप करिए. और फाइनली मैं यही बोलूंगा कि डरिए पर घबराइए नहीं. स्कैरी होइए पर घबराइए मत. डरिएगा तो कम एक्सीडेंट कम कीजिएगा और घबराइए मत. हो गया है, बहुत लोग सामने बैठे हुए हैं. एमवे है, डॉक्टर नरेंद्र सेठी हैं और काफी बड़े बड़े लोग हैं जो आपको मदद करेंगे. विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज माई सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. भरत, मैं एक लाइन यहाँ जस्ट बोलना चाहूंगा कि we would need support of people like Mr. Pradeep Hajare. He was spot on when he was talking about all these 7-8 points regarding the current pandemic. As far as companies like Amway are concerned, we would need government support to disseminate information about vitamins, minerals, and what separates us from other run-of-the-mill companies, because PSP factor is very, very important. What people are eating, it should have potency, safety, and purity that is required to safeguard people from imminent diseases. जो भी बीमारी होने वाली है उससे बचने के लिए जो भी चीज जिस पोटेंशियल में खाना है वो खाना पड़ेगा. तो ये अवेयरनेस, ये नॉलेज बहुत ही जरूरी है. और बाकी भी जो उन्होंने पॉइंट बताया बहुत ही अच्छा बताया. एंड वी नीड कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम people from government department to disseminate information. We just want information. आज डॉक्टर अगर गरीब लोग को भी बोल देता है कि आपको 1 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन में, वो इंतजाम करके ला देता है आज, लेकिन वो 10 रुपया का न्यूट्रलाइट डेली नहीं ले पाता है. एक मल्टीविटामिन का टैबलेट हमारा 18 रुपया आता है, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, उसकी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है. जब लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल जाता है तो लोग लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 18 रुपया क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं? बिकॉज दे लैक द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. So